Exercise 23. An infinite line charge produces an electric field 9 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. So it's a very simple question. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite line charge is formula E is equals to 2k lambda by r. Electric field given 9 into 10 to the power 4. 2 value of k is 9 into 10 raised to 9. Lambda we have to find, and r is given here 2 centimeter, so in meter it is 0.02. Unknown term is a lambda, so on solving this you will get the answer lambda is equals to 10 micro, but unit of lambda is coulomb per meter. So this is our final answer, lambda is equal to 10 micro coulomb per meter. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have the surface charge density of opposite signs in the magnitude 17 into 10 raised to minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field to the left of the plates, to the right of the plates, and between the plates? So it's a very simple question. Electric field due to infinite charged plane, electric field due to infinite charged plane is equals to sigma by 2 epsilon 0. ये फॉर्मूला है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन. Now here in the question, two parallel metal plates are given and they are very close to each other, so we can consider them as an infinite plane. Very close to each other. The one has the positive charge, inner surface, and other has the negative charge. So both having equal value of sigma, 17 into 10 raised to minus 22. So it is positive sigma, it is minus sigma. We have to find electric field left of the plate, that is at the point number 1, right of the plate, that is point number 2, and in between the plates, that is point number 3. Now electric field at position 1 due to positive plate. So positive plate, so electric field is away from the plate. Then after at the point number 3, electric field due to first plate, means positive plate. So at third position in between, it is again away from the plate because it is positive. At the second position, electric field due to positive plate, so again it is away. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये तीनों तीन जो रेड कलर के एरो शो किए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमेशा पॉजिटिव से अवे रहेगा. नाउ द फॉर्मूला E1 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. देन आफ्टर ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो E1 sigma by 2 epsilon 0. We are taking a magnitude here, and here also E1 equal to sigma by 2 epsilon 0. After it, electric field due to negative plate at the first position. तो जो नेगेटिव प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो नेगेटिव है तो होगा टूवर्ड्स. एट द थर्ड पोजीशन ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, तो थर्ड इज इन बिटवीन, तो अगेन इट इज टूवर्ड्स.
At the second position, due to negative plate electric field, again it is towards. तो ये जो 3 एरोस मैंने शो किए हैं, it is negative charge electric field which is showing towards the negative plate. And the formula for it is E2 is equals to sigma by 2 epsilon 0. We are taking magnitude here. E2 is equals to sigma by 2 epsilon 0. E2 is equals to sigma by 2 epsilon 0. So see, at the position 1, which is left of the plate, A, left of the plates, तो प्लेट के लेफ्ट साइड आप देख सकते हो E1 एंड E2 सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो E इक्वल्स टू E1 माइनस E2 एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो आंसर विल बी 0. देन आफ्टर B, right of the plates, right of the plates, so again right side both the fields are in opposite direction, so E dash is equals to E1 minus E2, again it is sigma by 2 epsilon 0 minus sigma by 2 epsilon 0 equal to 0. Then after position 3, in between the plates, so between the plates here both the fields are in same direction, so is equals to E double dash is equal to same direction, so sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0 equal to sigma by epsilon 0. So E double dash is equal to value of sigma given in the question, that is 17 into 10 raised to minus 22. So 17 into 10 raised to minus 22 upon epsilon 0, 8.854 into 10 raised to minus 12. On solving this, we'll get the answer 1.92 into 10 raised to minus 10. Unit of electric field is Newton per coulomb or volt per meter. This is our final answer. Exercise 27. In a certain region of space, electric field is along z direction. The magnitude of electric field is however not constant but increasing uniformly along the z positive direction with the rate 10 raised to 5 Newton coulomb inverse meter inverse. What are the force and the torque experienced by the system having the total dipole moment 10 raised to minus 7 coulomb meter in the negative z direction? See the situation which is given here. Electric field is set in the z direction, तो ये पॉजिटिव z है, ये नेगेटिव z है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी टेक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लोअर साइड पॉजिटिव, upper side negative. As given here, the electric field is pointing towards the positive z direction. This electric field is non-uniform electric field. That means as we go towards the positive direction, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. डाइपोल मोमेंट 10 raised to minus 7 कूलम मीटर इज सेट इन अ नेगेटिव z डायरेक्शन. तो माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, it is from negative to positive, so it is set along the negative z direction. Question is, we have to find the force and the torque on this dipole due to this electric field.
So force on the dipole F is equals to QE divide by L multiply by L. Q into distance between two charges, it's a dipole moment. So P equals to Q into L dipole moment, which is given 10 raised to minus 7 coulomb meter. Electric field per unit distance E by L, it is given 10 raised to 5 Newton coulomb inverse meter inverse. So putting values of QL and E by L, F is equals to 10 raised to minus 7 into E by L, it is 10 raised to 5. So answer is F is equal to 10 raised to minus 2 न्यूटन. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो फेस कर रहा है वो नेगेटिव साइड को फेस कर रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव साइड को फेस कर रहा है. बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे हम z डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. तो ये वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बट बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो रिपल्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो डाइपोल मोमेंट रिपल्शन की वजह से नेगेटिव z डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. तो 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन इन माइनस z डायरेक्शन. Second question, it is torque on the dipole. Torque on the dipole. So formula of torque is tau equals to Pe sin theta. Theta is angle between dipole moment and electric field. So dipole moment in negative z direction, electric field in positive z. So theta is 180. So is equal to Pe sin 180. Sin 180 is 0. 0 into anything is 0. So torque is 0 Newton meter. This is the final answer. Exercise 28. It is now believed that the proton and neutrons are themselves built out of the more elementary units called quarks. Like molecules made up of atoms, atoms made up of fundamental particles like electron, proton, neutron. And here it is given that the proton and neutrons are made up of quarks. Okay. टोटल देर आर 3 क्वार्क्स इन ईच, यानी एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होंगे, एक न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स होंगे. देर आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क. वन इज अप क्वार्क हैज़ अ चार्ज +2/3, डाउन क्वार्क हैज़ अ चार्ज -1/3e. एंड together with the electrons build up ordinary matter suggest a possible quark composition of a proton and neutron. तो एक प्रोटॉन के अंदर एंड एक न्यूट्रॉन के अंदर कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क होंगे ये फाइंड करना है. सी अप क्वार्क का चार्ज है +2/3e, डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3e. फॉर प्रोटॉन इट इज गिवन कितने क्वार्क होंगे, तो 3 क्वार्क्स. तो प्रोटॉन हैज़ अ 3 क्वार्क्स. अब ये 3 क्वार्क के अंदर अप क्वार्क भी होगा और डाउन क्वार्क भी होगा, बट ये 3 में से कितने अप और कितने डाउन है ये फाइंड करना है. सो लेट एज्यूम n नंबर ऑफ अप क्वार्क्स. सो डाउन क्वार्क कितने होंगे, 3 माइनस n. n नंबर ऑफ अप क्वार्क, सो 3 माइनस n होंगे डाउन क्वार्क. करेक्ट. नाउ द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज +e. तो +e इज इक्वल टू n नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, तो n इंटू द अप क्वार्क्स चार्ज +2/3e, तो n इंटू +2/3 प्लस डाउन क्वार्क 3 माइनस n और उसका जो डाउन क्वार्क है -1/3e चार्ज है, तो 3 माइनस n इंटू -1/3e. On solving this you will get the n is equal to 2. तो n जो था that is a number of up quarks, so we get the answer कि out of 3 there are 2 up quarks. Correct. And 3 minus n, so 3 minus 2 is equal to 1, that is 1 down quark.
So there is 2 up quarks and 1 down quark. तो quark composition जो होगा वो होगा up and down. UUD. This is a quark composition for proton. The same for neutron. Neutron has also 3 quarks which is given in the question. N number of up quarks, so 3 minus n number of down quarks. Correct. But the charge of neutron is 0. So we put here 0. अब कितने up quark थे तो n. And the charge of up quark is plus 2 by 3e and 3 minus n down quark, so 3 minus n into minus 1 by 3. On solving this, you will get the answer n is equal to 1 up quark. इसका मतलब है कि 3 क्वार्क्स में से एक अप होगा तो ऑब्वियस बाकी के 2 कौन से होंगे, डाउन. तो क्वार्क कंपोजिशन फॉर न्यूट्रॉन होगा UDD एंड फॉर प्रोटॉन होगा UUD. I hope all of you understood this, and this is our final answer, that the quark composition for neutron it is UDD and for proton it is UUD.